Method is what? It contains the set of instruction to do a specific task. If you take an example, when you click the Bluetooth option, your Bluetooth is enabled. Then when you click the Wi-Fi option, Wi-Fi is enabled. So every option is used for unique purposes. So it call as what? You can say it's just a example of every option is used for unique purpose. So behind that option, some kind of code is written. Okay. ଯେମିତି कि ଆମେ ATM ଯିବା, so when you press withdrawal option, then it is withdraw the amount. When you press cash with receipt button, then it is showing you in a different work. So in ATM machine also, every option it is display to do the unique work. So behind that option, some kind of code or instruction we have written. So that is called as a method, or you can say the this option are used for the unique purposes. Now in Java, how you have to define this method? So for defining this method, the syntax for defining method, syntax for defining method. First, we have to define access specifier, which is called as like public. Public is the access specifier. Return type, then function name. This is the first option. Second option, these are the syntax or rule. Okay, so method केमते define हबो माने को way रे define with सेटा तारा syntax टा मु लिखुची. Access specifier, return type, function name, then parameter. Okay, so I will discuss one by one. Then third approach is without access specifier. Return type, function name. Fourth approach is with the parameter. Okay, so with the parameter that we have to pass, then here return type is not required. So first we define public void show function. Public is access specifier. That means this function is accessible anywhere. माने function टाको हमें सब जगह रे access कर परिबा. Public void show function. Next is
public void show INTA. Okay, so here INTA is called as the parameter. Here I define INTA is a parameter which is used to pass and receive the information. Parameter is used. Parameter is just acting as a bridge. It is taking the input from user and store in the variable. Okay, so parameter which is used to pass and receive the information. Then next is void show function. Means without access specifier we define. Why not define any public, private, anything? Or fourth one is void show INTA. Okay, so it is the 4 approaches that we are using for defining a function. So after defining a function, you have to call it. Okay, function define itself पर हम देखो call करियो. Suppose मोर example टी देखो ची, हमें program रे दिखेगा class demo function. तो मैं टी वाले function define करीबी. Suppose I define here public void show function. आ गोटे function मैं define करूची public void display function. एठी हमें दीटा function हमें define करले. Okay, तो next हमें function को केमते call करिवा. Function को call करिया पे हेले हमें main method बनेवा public static void main string args. So it is a main method. So in the main method we access the function. So how you have to access the function? First you have to create a object of class. हमें class रा object बनेगा पड़िबो. Class रा object केमती बनेवा? Demo phone. एटा हला होची हमारा class रा name. Class रा name हैला demo phone. I equals to new demo phone. तो हमें class रे एठी object बनेले. Object थ्रू हमें function को call करिवा. I dot show function. Then I dot display function. अच्छा जितना display function हमें pass करिवो गोटे parameter एठी निजियो INTA. यदि मो INTA नौची एठी ताले मु जितेबेले फंक्शन को कॉल करिवि मते एठी इंटीजर वैल्यू दबाको पड़िबो 20 पास करिया पड़िबो. ताले कोन हबो ए 20 टा आसी के एठी स्टोर हबो. यदि मु आ गोटे फंक्शन डिफाइन करूची एठी आ गोटे फंक्शन मु सपोज डिफाइन कली public void display x function. Suppose I define here character. The character a मु जदि define करूची तले मोर ऑब्जेक्ट एठी कोन डिफाइन हबो एटा होची ऑब्जेक्ट. प्रथमे क्लास नेम हमें पास करिवा देन ऑब्जेक्ट नेम पास करिवा न्यू देन क्लास नेम. न्यू कीवर्ड लिखिले एई ऑब्जेक्ट पे हमें मेमोरीटा क्रिएट करिवा. एई जो नेम आई नेम ता हमें जे कोनोसी नेम देई परिबा. एटा नाही जे मु खाली आई देइची हमें जे कोनोसी ना देई परिबा. मु एठी देई देले डेमो फोन इक्वल्स टू डेमो फोन आई इक्वल्स टू न्यू डेमो फोन. तो आई इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास. तो ए ऑब्जेक्ट हमरा जे कोनोसी ना दे परिबा. तो आई डॉट शो देन आई डॉट डिस्प्ले फंक्शन.
So nextly I call here I dot show I dot display I dot display x. So I pass in a single letter. Suppose I pass here A. That means only A is stored here. Okay. If you define your string, suppose if I define here string, यदि मैं string pass करছি, then এটা ମୁଁ command line ଦଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ use କରିବା କଣ I dot display x. यदि string ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ name pass କରିପାରିବି. Suppose Java. Okay, so it is a way of calling function. Okay, so first of all you have to create a object of class. The class rahela kona na demo phone. So we have to create a object of class. Through that object we are calling show function. हमें show function को call कर ले. Then हमें display function को call कर ले. Display function को जेताले call करचे एठी integer अछि ताले एठी 20 टा जंके एठी store हैला. तापर एठी रहिल माने कोन display x एठी string अछि. String हेले combination of letter हमें pass करे. Java टा एठी जंके store करा. That is the way of calling function. बुझेला ना कार किछि डाउट अछि संगीता तू आज्ञा बुझला आज्ञा सर okay, so I move to the next. So these are what syntax that I have passed. Now I go to the program. मैं ଏବେ program देखो जार program कौन है परिबो. Just save the program here. So this is an example. Okay, class demo method int a. Then here we are using void show function. सर एटा गोटे प्रोग्राम हाँ एटा program. So that is a syntax. एटा हम खाली बुझेइले. It is program. Okay. So first of all मोरे class define कली. Class name हैला demo method. अच्छा class भितरे हमें जहाँ भी variable और function define करिवा that is called the member of a class. That is define कली int a. int a means it is a member variable. Okay, so member variable means the variable that is defined inside a class is called the member variable. आउ ये जो variable टा हमें define करिचे class भितरे ये variable टा आमर class भितरे जेकोनोसी जगह रे हमें आको access करि परिबा बा use करि परिबा. एटी रहला int a तापर हमें रहला void show function. एटा गोटे show function रहला तापर हमें define कले display function. Show function and display function. Okay, show function and display function रहला int b. तो एबे हमें कोन करिबा एटी पैरामीटर नाही एटी पैरामीटर अछि.
ताले फंक्शन को कॉल करिया पे हेले कोन करिया को पड़िबो ना फर्स्ट हमें जो क्लास अछि ए क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेबा क्लास रो ऑब्जेक्ट टा कोठी बना जाए ना मेन मेथड भीतर बना जाए तो डेमो आई इक्वल्स टू न्यू डेमो तो क्लास रो हमें एठी ऑब्जेक्ट बनेले ऑब्जेक्ट बनेला परे हमें सही ऑब्जेक्ट थ्रू रे जो आई ऑब्जेक्ट अछि ऑब्जेक्ट थ्रू रे हमें वेरिएबल को कॉल कले ए टा को कॉल कले तो आई डॉट ए इज इक्वल्स टू 20 ओके आई टा हला ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट थ्रू रे मो ए को कॉल कली स्टोर कली 20 तापरे मो फंक्शन गोटे अछि शो फंक्शन आई डॉट शो फंक्शन एटी स्टोर कली आई डॉट शो दिस इज ए मेंबर फंक्शन हम फंक्शन टा को कॉल कली शो फंक्शन टा को कॉल शो फंक्शन रे कोनोसी पैरामीटर ना तापर मु कोन कली ना डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कली आई डॉट डिस्प्ले डिस्प्ले हला 50 तो एटा हमें 50 एठी पास करले ए जो 50 जो पास करूचे ए जो डिस्प्ले हमें जेतला कॉल करूचे एठी कोन रहिछि इंटीजर सर आपन वॉइस क्लियर होनी एबे क्लियर हला देखियो ऑडिबल ना प्रॉपर्ली संगीता ऋतु मु कथा ना सर ऋतु यस सर नेटवर्क अप एंड डाउन होची संगीता आउ थे रिपीट कर दउची आमे जोटा यूज करूचे एटा होची फंक्शन देखो कोन रहउची आउ थे कहि दउची मूलरू ए गोटे क्लास आमे डिफाइन कले क्लास रो नेम हला डेमो मेथड and here we define the variable int a which is called as the member variable member variable माने क्लास भितरे हमें जो भी वेरिएबल डिफाइन करबा ताको कहबा मेंबर वेरिएबल and then हमें डिफाइन कले एटी कोन फंक्शन डिफाइन कले void show फंक्शन डिफाइन कले जेते बेला हमें show फंक्शन ता डिफाइन करूचे आर फंक्शनलिटी रहिला सेमती हमें कोन कले ना डिस्प्ले फंक्शन ता को भी डिफाइन कले void display display रहिला int b एटी रहिला कोन हमर पैरामीटर रहिला ओके पैरामीटर माने कोन हमें तले फंक्शन को कॉल करिवा हमें फंक्शन भितर को किछि वैल्यू दबा तो पैरामीटर इज इंटरैक्टिंग with the function and with the user सहित से इंटरैक्शन करिवो तो एबे देखो मु एठी कोन करली ना फर्स्ट मु जो डेमो मेथड बनेली डेमो मेथड I is the object equals to new demo method ओके माने ए जो क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेली अच्छा ऑब्जेक्ट बनेला परे ए ऑब्जेक्ट थ्रू रे ऑब्जेक्ट मींस व्हाट इट इज ए इनविटेशन ओके और इट इज ए रिप्रेजेंटेटर ऑफ ए क्लास रो रिप्रेजेंटेटर एटा ही गला तो ये जो आई ऑब्जेक्ट हैला ए आई ऑब्जेक्ट थ्रू रे मो मेंबर्स मान को कॉल करबी कोरा कोडी मेंबर रहला ना मेंबर एठी रहला ए तो आई डॉट ए एठी ए को मु कॉल करले स्टोर करले 20 ओके 20 माने माने ये जो मेंबर वेरिएबल टा को मु कॉल करके ता भीतर वैल्यू स्टोर करले 20 तापर एठी गोटे शो फंक्शन अछि सेंदे शो फंक्शन को कॉल करले आई डॉट शो मेंबर फंक्शन जेतरा मो शो फंक्शन को कॉल करूची एठी देखेबो दिस इज मेंबर फंक्शन तापर एठी होची डिस्प्ले फंक्शन आई डॉट डिस्प्ले जेतरा मो डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूची एठी गोटे पैरामीटर अछि int b एठी पैरामीटर अछि int b तरे जो b अछि 50 टा को मु एठी पास करले int b जे तले 50 टा मु एठी मु पास करूची ए 50 टा कोड रहला b रे रहला तापर मु ताको कोड स्टोर करिवि b रु आनी कि गोटे वेरिएबल मु x डिफाइन करली जेटा कि int x टा को कुआ जीवो लोकल वेरिएबल काहे कि कुआ जीवो ना ये वेरिएबल टा केवल ए फंक्शन भीतर डिफाइन है ए वेरिएबल टा आउटसाइड ऑफ द फंक्शन हमें एक्सेस करि परिबा नाही तेनु आको कुआ जाय x टा को कुआ जाय लोकल वेरिएबल तो ये जो b रो वैल्यू टा जो मु पास करली 50 ए 50 टा आसे कि हमर x रे स्टोर हला तापर मते शो करिवो this is parameterized function value is 50 then laterally it is showing you this is a member variable I dot a okay so I dot a so that means it is display you 20 here okay so now I run the program java c
ओके तो फर्स्ट देख कौन है फास्ट मत देखेला दिस इज मेंबर फंक्शन एटा केमती देखेला ना प्रथम तो मु ऑब्जेक्ट बनैली ऑब्जेक्ट पर से ऑब्जेक्ट रे मु मेंबर वेरिएबल ए को कॉल कले आई डॉट ए इज इक्वल्स टू 20 गुड तापर मु आई डॉट शो फंक्शन को जेतल मु कॉल करूची एटा अल्टीमेटली मते देखेबो दिस इज मेंबर फंक्शन तो एटी मते देखेला दिस इज मेंबर फंक्शन तापर मु कोन कली ना मु डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कली जेतले डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूची एटी गोटे पैरामीटर अछि सो पैरामीटर वैल्यूटा पास कली 50 टा को पास कली ए 50 टा कोडी स्टोर हैला ना बी रे स्टोर हैला बी रु कोठी आसिला ना एक्स रे स्टोर हैला तो एबे देखेबो दिस इज ए पैरामीटराइज फंक्शन वैल्यू इज 50 द पैरामीटराइज फंक्शन वैल्यू इज 50 तापर पुनी नेक्स्ट कोन हैला तापर नेक्स्ट लाइन में देखेबो दिस इज ए मेंबर वेरिएबल वैल्यू कोठी स्टोर करछे ना आई डॉट ए इज इक्वल्स टू 20 तो एठी मते 20 देखेगा बुझियला जे एनी डाउट संगीता तू Yes, sir, बुझियला। Yes, sir. बुझियला। किसी डाउट नहीं तो यदि ओके এটা হচ্ছে ফর ডিফাইনিং এ ফাংশন then I move to the another part that is called the constructor. What is constructor that we are going to discuss about it. So we are going to discuss about constructor. So constructor is a special type of method which is used for initializing the member variable. The constructor is a special method which is used for initializing the member variable. Constructor name and class name is always same. Okay, so constructor is a special method which is used for initializing the member variable. Member variable means those variable is defined inside a class. So class भीतर हमें जहाँ भी variable define करीबा तो class suppose I define class xyz. So in the class what are the variable you define? Suppose I define here int a, so it is called as the member variable. It is called as the member variable. So for initializing this member variable, we are using constructor. The constructor is a special method which is used for initializing the member variable. Then there is a question comes to your mind in the previous program. Is there any constructor is present? Okay, so before that I show you how to define a constructor. So we know that the constructor is a method which is used for for initializing the member variable. Then it is a special type of method. The constructor name, another important thing is what? Constructor name and class name is always same. Your class name is xyz and your constructor name is xyz. The constructor name and class name is always same. The class name is xyz, constructor name is also xyz. So it is a special method which is used for initializing member variable. So here int a is equals to, I define here 20. Sorry, int a is already defined. So a is equals to 20. Okay, the constructor name and class name is always same. So now what happened? Then the question comes to your mind that in the previous program, is there any constructor? So if we look this program,
we go for this program, is there any constructor is present like demo method? Again demo method is present here? No. Then here constructor is present? Obviously no. So actually if you are not defining any kind of constructor, jodi ame konosi constructor program re define karune, that means there is a constructor is present, mane constructor ta be present ei class re achi, but it is present invisibly. Okay, invisible hai ki constructor ta hamara present achi. Constructor name and class name is always same. Constructor name and class name is always same, but here constructor is not present, but still there is a constructor is present which is called as the default constructor. Okay, so here also we call this constructor as a default constructor. This xyz is a default constructor. If you not write this constructor also, it is present automatically. Okay, so as I told you, it is a method. Constructor is a special type of method. Yes, it is a special type of method. Then for calling a method, again you have to create an object, and through the object you call the function. So as earlier, ये जो previous program में कौन कले function टाको बा show out display function को call करिबा को हेले हमें कौन कले first हमें class रा object बनेले ता सही object रे हमें कौन कले ना function को call कले show को call कले then display को call कले. So it's saying that for calling a function we are creating a object of class, and that through that object we are calling the function. ये जो object बनेला I throw रे हमें show function को call कले display function को call कले. Then constructor टा केमिति call होची? तो constructor एमती call हबो कि I dot then जो class name demo method call हबो कि ना? When how the constructor is called? At the time of creating a object of class, मु जेतेबेले class रो object बनाउची से समय रे automatically मोर constructor टा call हबो. मतलब जदि एठी xyz अछि मु main method define करूची public static void main, then I pass here string args. Then for creating a object of class, so when I create a object of class like xyz j equals to new Sir, ARGS टा कौन? args is a name. हमें ए args जगह रे अलग नाम भी दे परियो. You can give abc, there is no issue. It is just a variable name. Okay, so here I create a object xyz is the class name, object is j is new xyz. तो एठी मु xyz एठी बनेली, तो एठी मु class रा object बनेली. So I define here object of class is created. Object of class is created. So constructor is called here. Constructor is called here. एठी हमरा constructor टा call होला. Automatically constructor call होला. जेतेबेले constructor call हबो member variable टा को initialization हबो. So in a class there is more than one constructor will present. गोटे क्लास रे हमें more than one constructor define करि परिबा त ताको कुहा जिवो overload constructor. So it is a xyz, then I pass here xyz. Then दीटा जाको name जदि same रहउची compiler confusion नै जिवो को constructor टा केतेबेले कॉल हबो. सेति पे हम एठी parameter pass करिवा. Suppose I pass here int x. So it is called as the overload constructor. If you use more than one constructor,
with the same name, actually constructor name class is name is same, then you have to define a different parameter. हमको different parameter define करिया पड़िबो. जदि गोटे क्लास रे एक रु अधिक कंस्ट्रक्टर रहउचंदी ताको कुआ जीवो overload constructor. It is called as the overload constructor. XYZ is called as the overload constructor. So now I define here a is equals to x. A is equals to x. So now when you pass the value, okay, so here we are creating a one object, so again you have to create another object for calling the default constructor XYZ h equals to new XYZ. Then I pass the value here I pass the value 30. Okay, so then 30 is initialized in the x. From the x it is initialized in the member variable. Now a becomes here 30. So if you print anywhere like system dot out dot print ln, so it is display you the value. If you print a, so it is display you, it display 30. Okay, so it displays 30. So it is 30 show karibo. Okay, so there is more than, you can write more than one constructor in a program. So I write the definition here. What is a constructor? So I write here constructor is a special method which is used to initialize the member variable. Constructor name and class name is always same. Then constructor is called at the time of class object is created. The next point is there may be more than one constructor in a program. There may be more than one constructor in a program. If there is no constructor in a program, then default constructor present automatically. Constructor is a special method which is used to initialize the member variable. Constructor name and class name is always same. Constructor is called at the time of class object is created. So there may be more than one constructor in a program.
if there is no constructor in a program, then the default constructor present automatically. That is the work of your constructor. Okay, so now I show you the program. बुझीला कंस्ट्रक्टर कौन ना किसी डाउट अच्छी? यस सर बुझेला। So I'll show you one program. Okay, so now check. I define a class. Class name is constructor, then int a. It is a member variable. Then class name and constructor name is same. So here class name I define constructor. Here constructor name is constructor. Then in constructor we are initializing the member variable a is equals to 5. Here constructor is not a keyword. That is a user defined word. So a is equals to 5. Then system.out.println it is showing you. It is a default constructor, means here it is not having any parameter, here it is having a parameter. So in main method, when I am creating a object of class constructor I equals to new constructor, माने तले मु ए constructor टा लिखिबी तले automatically एटा कॉल हबो, एटा कॉल हेले a रो वैल्यू टा 5 रे इनिशियलाइजेशन हला, एटा देखिबो default constructor value is 5. Okay, then when I call like constructor j equals to new constructor 30, ताले कहां हबो ए जो 30 टा एठी आसी कि इनिशियलाइजेशन हबो, ax रे इनिशियलाइजेशन हबो, एठू आसी कि a रे स्टोर हबो, तापर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वैल्यू इज 30 मते एठी शो करियो। तो देखिबा